Just six of us. Okay, six of them. Any reviews on the earlier session? Any recap any would like to give on the session which we conducted yesterday? Two concepts we had seen yesterday. We completed the models of organizational behavior. SOBC. Yeah. So we took a recap of the earlier models, and then last model which was left was the SOBC model, right? Yes, ma'am. Yeah. I hope you all have understood all the models. Yes, ma'am. So the traditional models are no more used, or they are applicable only in defense, kind of a restricted, kind of a disciplined environment, whereas slavery and feudalism has totally now not in this particular uh, environment in modern times. In modern theories also, in modern models also, as we talked about autocratic model, that is related with defense, so that is not used. Then came the further models, collegial, supportive, systems model. All these are used, as per the situations. The systems model also actually are used, wherein it's typical, the managers drive the show. They take along with them the employees, their team members to achieve the common goal, just like based on the systems model. We talked about it in the various approaches in the earlier session. What else we saw yesterday? Or I think I had given you all a clue what we're going to talk about today. And I mentioned that it is one of the interesting session. So I thought people are curious to know what is interesting, but I can see the other way around. Just few people have joined so early. May it be a Saturday morning thing. Is it so? Any reflections, any feedbacks, anything anyone would like to contribute? Anyone would like to comment? Please unmute and speak. ऐसे कैसे चलेगा? नो वन इज रेडी टू स्पीक. या अभी नींद खुली नहीं है सैटरडे मॉर्निंग. आई थिंक ऐसे SOBC तो. model, ma'am. सॉरी. SOBC model. हाँ, वो तो कल हो गया ना. एसओबीसी मॉडल, एसओबीसी मॉडल हमने कल देखा है. There was additional one of the element which was not there in the earlier models, which was that the organism in himself or herself, that is B, the HR, the soft side of the whole situation. Okay, wherein response to stimulus was there, wherein that organizing, or we as human soft assets of an organization behave to give some consequences. The consequences or the behaviors are overt and covert, we talked about. Okay, that is, few are reflected, few are expressed, which are very apparently seen, the overt one, and the covert one are hidden. They may not be realized, probably they are reflected in a very hidden way. Okay, a feeling kind of a thing. How did you get that feeling? तो वो कभी दिखता नहीं है, that is covert. So SOBC model we talked about, and then at the end we gave a brief overview of the concluding of all the models. So वो हमने कल देखा है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ आज के सेशन के लिए. So I had mentioned that today we are going to talk about some interesting things on one topic. What was that? Anyone? मुझे लगा कि आप क्यूरोसिटी के बेसिस पे कुछ पढ़ के आओगे या कुछ बताओगे कि हाँ मैंने ये जोहारी विंडो कभी तो सुनी है या नहीं सुनी है. यस फ्रेंड्स. एनीवन वुड लाइक टू कमेंट? ये सेशन तो बोले बिना नहीं स्टार्ट हो सकता, अदरवाइज आई विल क्विट. शैल वी कॉल ऑफ द सेशन? अगर किसी को बात करनी नहीं है तो.
Shall we call it a day? No, ma'am. तो मेरी जिम्मेदारी अकेली की नहीं है ये सेशन रन करना, फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ. अदरवाइज आई मेक इट बोरिंग. पीपीटी स्लाइड बना के ठक 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 फिनिश, बाय बाय. एग्जाम के टाइम में रट्टा मारो, दे दो. इसका हासिल हाथ में कुछ नहीं आने वाला है. आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें. Organizational behavior is about you. It's about how you're going to place yourself in the world ahead. अब तक whatever we have seen about ourselves, probably आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये भी आपके एक आपके अंदर का हुनर है, या ये आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि अरे ये मुझ में खामियां भी है. Sometimes we neglect, we ignore, sometimes we deliberately ignore and not reflect. And sometimes somebody आपको बताते हुए भी आप नहीं नहीं, you get angry and annoyed. How can that person say about me like this? बट आप विचार नहीं करते हो कि ये सिचुएशन में आपने ऐसा रिफ्लेक्ट किया तो क्यों किया, या फिर आपने किया तो किस तरह से नहीं करना चाहिए था, या फिर किस तरह से अच्छा करना चाहिए था. Wouldn't you like to know about this? Wouldn't you like to think about it? Life will be more better ना. Yes or no? Yes, ma'am. तो मुझे लग रहा था आप लोग बहुत एक्साइटेड हो सुनने के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं लग रही है. और विद सच अ नो अटेंडेंस इज सो लेस, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है मुझे खुद को. तो shall we call off a day? You can sleep, get up after an hour probably. At 8:30 you can get up and continue with your further session. Shall we do that? I'll declare this topic. No, ma'am. No, ma'am. क्या करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज क्या करें, आप बताइए. $11 शिल्पा मैम का सेशन है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू बी देयर. आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन आपके हेडफोन्स ऑन होने चाहिए. आई एम डिक्लेयरिंग नाउ ओनली. प्रॉब्ली आपके शेड्यूल में रहा होगा 11 शिल्पा मैम आर फाउंडर सेक्रेटरी मैडम, उनकी सेशन है, तो इतना कम अटेंडेंस नहीं चलेगा. शी स्पीक्स विथ यू ऑल समटाइम्स, so or she may have a recorded session, but attendance is must. Okay, 11 pin the time. Okay, शायद I think I'll क्या करूँ मैं, आप बताइए. Ma'am, actually, I'm unable to recall. वी आर नॉट रिकैप का नहीं कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि आज का सेशन किस बारे में है. मैंने आपको बोला था कि किस बारे में है, लेकिन फिर भी. हाँ, Yeah, that's what I am unable to recall the word. इस जोहारी विंडो. ओके, एटलीस्ट आई कैन आस्क वन क्वेश्चन. आपके अभी आप 16 of y'all, anyone has heard this? No, Yes, ma'am. बोल No, ma'am. सकते. No, ma'am. Okay. Now what I'm going to do, when we proceed with the session, you will come to know that you are so much vulnerable to this Johari window, and sometimes that thing is there in your hand and you cannot use it because you are not aware कि ऐसी भी खिड़की होती है लाइफ में, कि वहां से आप झांक के देख सकते हो खुद को या दूसरे को भी. Wouldn't it be interesting, friends? Yes, ma'am. एंड XYZ सिचुएशन में आपने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसका एक अंदाजा भी आ सकता है. Isn't it? Please remember this, why I told about this as an interesting session, for two things. One is this concept is very an amazing thing in organizational behavior. Okay, and it is going to be referred to in multiple cases. That is your responsibility. क्योंकि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो लाइफ में भी, ये आपके ऊपर है. लेकिन when I'm talking about with respect to the organizational behavior as a concept, as a session, in the session, I may relate it with multiple concepts later on. तो वहां पे होना नहीं, अरे ये क्या है, ये क्या बता रही है मैम, अभी जो मिस कर रहे हैं, I can't help. I'll keep on referring in Johari window, and then or some words used in Johari window, and if people are not aware about it, I can't help it.
बिकॉज आई डिक्लेयर्ड यस्टरडे कि ये इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लाइफ में। आपका ये नॉलेज आपको बहुत आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में और आपके सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन सकता है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की बात हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात हो, सेल्फ ग्रूमिंग हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, इन सारे केसेस में जोहारी विंडो आपके लिए मदद का मतलब इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन योर हैंड. So that's the reason I was talking about this in a in this way. Let's begin with the session. I'll share the screen. Are you ready to participate in the session or no? Yes, ma'am. We are Okay. ready. Okay. Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, ma'am. ओके तो ये पूरा सेशन आपको आपको रेडी होना चाहिए, मतलब अलर्ट होना चाहिए. आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन ये सेशन के लिए. बाकी के सेशन के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है आप हेडफोन्स लगा लीजिए एंड देन जस्ट डू योर वर्क. ओके. बहुत सारी बच्चे मतलब मैं लेटा हुआ हूँ और सुन रहा हूँ मैम का सेशन, बहुत अच्छा लगता है. सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है. ये गुड़ी गुड़ी नहीं चाहिए ये सेशन के लिए. ये सेशन मुझे अलर्ट चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए इसमें, अदरवाइज आई कांट गो अहेड. ओके. सो बहुत सारे सेशन ऐसे रहेंगे कि आई विल अलाउ यू, ओके ठीक है कान में वो लगाते बैठो सुनते रहो खाली बस, दैट इज ओके. लेकिन कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक्टिविटी होती है, कुछ सेशन ऐसे होते हैं जैसे कुछ टास्क दिए रहते हैं, कुछ सेशन ऐसे होते हैं मुझे आपका रिप्लाई चाहिए तो मैं पहले ही बता दूंगी तो आप अलर्ट होगे. तो ये वाला सेशन आपके लिए है, जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What do you see over here? I want quick two answers. Quickly. I want answers in few seconds. Don't stare at it much. Just quick answers. Frog. बेडूक आणि घोडा दिसतो मॅडम. कोण आहे हे? आदेश फडतरे. भारी. लय भारी. आता बाकीच्यांना सांग किती जणांना काय दिसलं आणि किती जणांना काय दिसलं. आता क्लास असता तर खूप मज्जा येते या सेशन मध्ये, बट देन वी हॅव टू प्ले विथ द व्हर्च्युअल थिंग हिअर. Maximum people, 80 to 90% people will see frog very easily, isn't it friends? Yes, ma'am. Yes. And there would be few still, कुछ लोगों को दिखा भी होगा, अभी आदेश ने बताया इसलिए, लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, ऐसे भी 1-2% रहेंगे. Yes or no? Very honestly. Yes, ma'am. या तो आदेश बताओगे सबको कि आपको दूसरा एनिमल किस तरह से दिखा? थोडासा मोबाईल तिरका झाला, फोटो दाखवला मॅडम. हा, त्यामुळे आता मोबाईल कसा करायचा किंवा दोज आर वर्किंग ऑन लॅपटॉप, आय वुड आस्क यू ऑल टू टिल्ट युअर ओन हेड ऑन युअर राईट हँड साइड. राईट हँड साइडला थोडं वाका, तुमची मान अशी कलती करा राईट हँड साइडला आणि मग बघा त्या पिक्चरकडे. फ्रॉकचा जो डोळा आहे तो नाक आहे हॉर्सचं, कळलं? आ रहा है क्या समझ में? अरे कुछ तो जवाब दे दो. Yes, ma'am. Anyone in the class who did not follow it? कोणी आहे का? Now we can see. Yes. या सो मोर और लेस सबको अभी दिख रहा है ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ. ओके. जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो होता है वो ऐसे दिखता नहीं. ये अजीब से वर्ड्स डायलॉग्स हम मूवीज में सुनते हैं, तो आई एम टेम्पटिंग टू यूज दिस वर्ड. ओके, लेट्स मूव अहेड. देयर इज मोर टू गो. अभी ये इसमें क्या आपको दिख रहा है? क्विक आंसर्स, क्विक आंसर्स, क्विक आंसर्स. क्या दिख रहा है? वन पर्सन में अनम्यूट एंड स्पीक अबाउट इट. दो शब्द. छोटं मूल दिसते, आईच्या गर्भातील छोटं मूल दिसते. हा आदेशच आहे का? होय. आदेश आता तू 2 मिनिटं गप्प राहायचंस. ओके, दिसतंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. When you look at this particular picture, हमारी नजर
Okay, I want everybody's participation and not just one person. I want everybody's participation. नहीं तो फिर मैं नाम लेना शुरू करूंगी. फिर that will be put you in a very difficult situation. No, I see a small baby. Yeah. Okay. Who is this? Soham. Who is this? Okay. Finny. जब मुझे पूछा गया था तो विद इन अ सेकेंड जवाब देना था, तो मुझे खाली ये 2 आदमी दिखे. Okay, probably a girl and a boy, or 2 people I would say, and they are watching the water body there. Okay, lekin if we actually observe it, you would also see the baby. मुझे तो पहले first attempt में नहीं दिखी थी. Obviously then यहाँ पे this is much revealing the baby. Okay, the bigger picture of life you don't see it. Many people, बहुत सारे जवाब होते हैं कि मुझे आदमी ये 2 ही दिख रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं. लेकिन if you see the canvas and see the bigger picture of life, that's how I relate it to. You get to see the things which you might have not even thought of. Okay, fine. We'll move ahead, and Adesh, I would request you to be now not answering. Adesh will not answer. Yes, others can try it now, and then if others fail, Adesh will reply. Yes, it's very simple. Yeah, dog. Min. Dog. आता खेळ सुरू झाला. I want answers. Yeah, dog. ये तो सबको दिखेगा. Yes. Dog. Dog. 100% सबको दिखने वाला चीज है ये, बहुत ही आसान है ना. फिर ये क्यों मैं लाई क्लास में. Now the trick is further. I mean, अभी जो क्वेश्चन ही मैंने पूछा नहीं है अभी तक. क्वेश्चन पूछूं क्या? आपको क्या दिखता है ये मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, ठीक है. Can you find the owner of the dog now? Hello? Can you find the owner? वो डॉग अपना ओनर खो गया है, आप ढूंढ के दोगे क्या? Adesh will not speak now. I want others to find and help that dog find owner. Ajay, probably your mic is not working. It is disturbing. Ajay Puri, you can chat and give your answer if your mic is not working. Yes, who would try? I'll spend just another minute on that because आपको सेशन में और बहुत है. Anyone? Is it that difficult, Dipali? Still trying to find out, ma'am. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. Time out. Anyone? Last second. Now I would like Adesh to try it out. नो मॅम काही समजत अरे नाही. बापरे, आदेशला पण नाही सापडलं. अवघड आहे मग आता. खरंच अवघड आहे मग. आर यू श्योर आदेश? होय. अरे बापरे, ये तो बहुत डिफिकल्ट आहे फिर. ओके, आय हेल्प यू इन दॅट. कसं असतं आयुष्यात पण असंच असतं. तुझं आहे तुझं पाशी, अँड देन यू कीप ऑन सर्चिंग एवरीवेयर. ओके, एंड यू डोंट फाइंड द सोल्यूशन. ऐसे ही है ये पिक्चर की तरह. बहुत आसान लगता है वैसे. अरे ये तो डॉग है. ओके, आपके सामने कोई घटना घटी है, आप बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंसेस निकालते हो, ये ऐसे ही रहेगा. या फिर हाँ उसका स्वभाव ही ऐसे है. या फिर आप बोलोगे कि अरे ये ऐसे ही पैटर्न में बिहेव करता है. You have predispositions, and second important thing is that you don't see the things as they are, isn't it? ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है माइंड में भी.
Please remember, each one of us has unique analytical abilities and perceptions. ये एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी याद करना पड़ेगा कि कितना डिफिकल्ट है ह्यूमन ब्रेन. यू विल एक्सेप्ट इट. ओके, ये आर्टिस्ट जो भी है, हैट्स ऑफ टू दैट आर्टिस्ट. ओके, एंड जो हारी विंडो के लिए बेस है, वैसे परसेप्शन मोटिवेशन के लिए भी ये बेस एग्जाम्पल हो सकता है. It is totally your analytical ability and perception about certain people, about certain situation. Okay, और आपके corporate environment, ये environment में या फिर आपके routine personal life में आपको कोई एक behave करता हुआ दिखता है, लेकिन वो वैसे होता नहीं है. कुछ और hidden रहते हैं aspects जो आपको मालूम नहीं है. ओके, या फिर कुछ दिखता, मतलब कुछ होता है सामने, लेकिन आपको वो आपकी नजर में नहीं आता. प्लीज रिमेंबर, आपकी नजर में नहीं आता. एंड देन यू टेक डिसीजंस रॉन्गली. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपने उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया है, क्योंकि कुछ बातें आपकी नजर से गुम हो चुकी है, या यू हैव लॉस्ट दैट पार्ट. एंड वी वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट ओ दिस इज दैट वे. वेरी स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं खुद को. And then, though you win the case, you have lost that person. Though you win that case, you have lost that deal. Though you have win that conversation, you have lost that customer. Are you agreeing with this? It is so important to know organizational behavior. Now, अभी ओनर की बात हो रही है तो मैं आंसर दे देती हूँ. Now, if you look at the screen, and if it is a screen, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपकी मुंडी हिलानी है, गर्दन ऐसे लेफ्ट में झुकनी है, और फोकस ऑन द जो कान है ना, ये डॉग का जो कान है, ईयर है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके देखिए. दैट इज द हैट और कैप ऑफ अ पर्टिकुलर ओनर. ओके, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए वो हैट. ओके, हैट का जो, लेट मी यूज द कहाँ गया माउस. माउस दिख रहा है मेरा? इज द माउस विजिबल? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ये हैट दिख रही है आपको, ये वाली हैट, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes. ये हैट है, और ये उसकी आंख है, ये उसकी नाक है, ये मुंह है, उसकी जुबान है, एंड दिस इज हिज बियर्ड. और इवन विदाउट द बियर आपको ये चिन दिख रही है. फिर Yes, ma'am. Now I can. नाउ इट इज विजिबल, राइट? ये उसका फोरहेड देखिए, इजंट इट अमेजिंग? है कि नहीं? मैम. या आदेश? ओके, ओके, गॉट इट एवरीवन, या किसी को अभी नहीं दिख रहा है? Got it, ma'am. गॉट इट. Got it. मोबाइल को आपके लेफ्ट हैंड में टिल्ट करके देखिए, आपको दिखाई देगा. ओके, वंस अगेन, ये कैप है, दिस इज द ईयर. आई होप स्टिल द कर्सर दिख रहा है मेरा? यस मैम. Okay, I'm just checking because a few of the utilities of the full version of Zoom session I have not used. Earlier I used to use only the limited version of limited time, but thanks to our college that we have got the licensed version also. So our task is becoming more comfortable. But let's explore it more. Okay, so moving ahead. अभी कमेंट कीजिए आप ही, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. प्लीज कमेंट. I think मिरर में खुद को देखें. Is it? सॉरी, मिरर, सामने मिरर है. सामने मिरर है. ओके, ऑब्वियसली सामने मिरर है. गुड. ओके, Reflection is different. हु इज दैट? So, ma'am, Yes, so could you please repeat what you said? reflection of the man is different in mirror. Very good. Yes, reflection of that man. He's
Yes, Yeah, the Dipali. man is thinking positively and looking at himself as a dressed up in a good manner. Very good, No, he, Dipali. Man is thinking, she has used the word positively, is thinking about himself in the mirror. Any other answer for this? Because ये आपको आपके thinking या thought process भी दिखाती है. Very good, Dipali, that you have brought this point. Positively, he is looking himself in the mirror. Any other answer for this? अभी देखो मैं क्या बोलती हूँ. दीपाली ने जो बोला वही मैं बोलूंगी, लेकिन अलग तरीके से. दीपाली ने बोला पॉजिटिवली वो आदमी दिख रहा है अपना खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में कि कितना अच्छा दिख रहा है वो. ओके, नाउ आई वुड यूज द सेम इमेज एंड द सेम परसेप्शन बट इन अ नेगेटिव वे. ओके, दैट पर्सन इज सो लेथार्जिक, ही इज सो शाबी, ही डजंट वांट टू परफॉर्म, लेकिन वो बूस्ट करता है मैं कितना अच्छा हूं. ही शोज ऑफ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Interpretations are different. Dipali talked very positively. Okay, where I gave you all idea about the gray side of the picture also. कि किस तरह से अलग भी हो सकता है. Isn't it? जैसे 6 and 9 का फिगर है, 6 और 9, the way you see it, the perception changes. Isn't it? Yes. yes, Another interpretation also आ सकता है इससे. Again, it would be say positive only. Not only what Dipali said कि उसका positive image दिख रहा है. I would say that I'm looking forward to see myself, down the line a year after my makeover, because I'm working on some good project. I'm a very hard-working person, and I'm going to look forward of reaching to this level, isn't it? See the interpretation, 3 interpretation of single image. There could be multiple such kind of interpretations. Are you following? Yes, ma'am. So ये पूरा mind game है. ये पूरा mind game है. And that happens in the organization. Please don't judge a person, okay, by his appearance. हम बोलते हैं ये इस वजह से, because you don't know what is the hidden talent in that person. Okay, because when Sudha Murthy ji, okay, I hope most of you all are aware of this incident when she was flying and then she was denied the business class based on her appearance. Okay, as an Indian lady in a shabby sari. I hope most of you all know that सुधा मैडम कभी अपनी खुद की साड़ी खरीद, she has never purchased a sari since last maybe more than a decade. Can you believe this? Okay, I hope you know who is Sudha Murthy ji. yes, ma'am. कौन Yes, है yes, वो? ma'am. Ma'am, book writer. I am reading their book now. Sorry, I am reading one Narayan of Murthy. the book, ma'am. so कौन है वो सोहम? Uh, I, Narayan Murthy, wife, Infosys Yes, founder. Dipali, she's the wife of नारायण मूर्ति जी, जो इन्फोसिस के वन ऑफ द ओनर थे, फाउंडर थे. ओके, क्योंकि उनके 5 फ्रेंड्स मिला के उन्होंने वो कंपनी शुरू की थी. नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति एंड फ्यू ऑफ देयर फ्रेंड्स, दे वर स्टडीइंग टुगेदर. और उन लोगों ने बाद में शादी की, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी ने. बट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेंशन ओवर हियर इज दैट सुधा मूर्ति जी never purchased a sari for herself. She's very, I mean, she works at least once in a week or once in a fortnight with her pantry people. She cuts the vegetables, can you believe? She does any such kind of work at the ground level. She loves it. But more importantly for this example, when she was traveling, and as I said, she doesn't purchase her own sari, because जो भी फेलिसिटेशन के वक्त को किसी ने दिया होता है या फिर कोई प्यार से देता है, जो भी है उतनी ही वो यूज करती है. शी डजंट हैव वैरायटी ऑफ कबर्ड्स फिल्ड विद साड़ीज. ओनली फ्यू, जो भी किसी ने प्यार से दिया है बस वही वो संभाल के रखती है, वही वो रीयूज करती है हमेशा. So she was denied the business class in a flight, and she was going to address a conference, an important one, and she was one of the speakers. Can you believe this? What kind of perception was taken incorrectly by those whatever staff or people, those who she appeared to be something else, and she is someone else. She is a lady with great height of thoughts and humble living style. Again, this is a different scenario which I just explained.
You cannot judge a person by his or her appearance. Okay, और प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स तो दिखते नहीं ना, तो यही ह्यूमन बिहेवियर का प्रॉब्लम हो जाता है जब आप किसी के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, चाहे वो आपके निजी जिंदगी में हो या चाहे वो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में हो। लोग गलत समझते हैं, आप बोलते हो क्या, या गलत इंटरप्रेट करते हैं। ओके, तो आप ठीक तरह से इंटरप्रेट करना सीखो और आप सही सिग्नल्स देना सीखो। दिस इज इन योर हैंड। You cannot control other people directly. You can control yourself. You cannot change the world. You can be the change agent, but by changing yourself. मोडेन पण वागणार नाही इथं चालणार नाही. Otherwise you'll fall, isn't it? So you can make the things better by using Johari window kind of concepts. It is not only used in self-awareness, like I know myself better as well as my peer better. Okay, it is going to groom your personality. इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका इंटरपर्सनल इससे बहुत रिच होता है, बहुत अच्छी तरह से सुधर जाता है आपका इंटरपर्सनल। ओके, एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन टीम एंड एज इट इज, वेदर यू आर अ ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इफ यू आर अ एम्प्लॉई वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बोथ द वेज ग्रुप डायनामिक्स कम्स अप, और वहां पे आपका डेवलपमेंट खुद का और आपकी टीम का इससे होता है। सो यूटिलिटी ऑफ जोहारी विंडो इज एम्पल। ये बेस मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये सब आपको ट्रेड्स क्यों बता रही हूँ, बिकॉज of the concept which is base of human psychology, left brain and right brain. You can take a snapshot or a screenshot of this because this is going to be the base of our subject also. Okay, जैसे right brain है, आप emotions से उसके जुड़ी जड़ है, मतलब रूट है emotions. Okay, आप randomly tangently दिमाग कहीं पे भी आप पहुंच सकते हो यूनिवर्स में। Okay, your brain works on intuitions. Your brain works on holistic approach. Okay, सर्वसमावेशक, कुछ भी हो सकता है। Okay, you are working on synthesizing your thoughts, merging, synerging. You are looking to the subjective descriptive part of it and looks at a whole. That is holistic actually. Okay, that is right brain. Okay, related with emotions. Whereas your left brain, क्या है लेफ्ट ब्रेन का? रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। ओके, कुछ पैटर्न है जो आप थॉट प्रोसेस आपके उसमें लगा देते हो, सीक्वेंस करते हो और कुछ इन्फ्लुएंसेस निकालते हो। इट इज हैविंग एनालिटिकल अप्रोच, रैशनलाइज्ड अप्रोच। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव। इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव। 1 + 1 = 2। लेकिन राइट ब्रेन हो सकता है तो 1 + 1 कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली 11। आपके घोड़े कहीं पे भी दौड़ सकते हैं। Okay, so left brain actually has tidbits of kind of a component, looks at parts, whereas right brain looks at whole, complete scenario. Okay, so this is about left brain and right brain, and that's how uh, the more you utilize both these brains and concentrate on it, the more you will achieve in your life. Why? अभी जो फ्रॉक का एग्जाम्पल लिया, या फिर आई मे कम अप विथ सो मेनी नंबरिंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नाउ आपका अगर लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट। प्लीज रिमेंबर, ये क्लास में अभी 23 पीपल है, हर एक का दिमाग अलग है। 25 पीपल है, हर एक का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, उस हिसाब से उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर बनता है। वो आदमी किस तरह से समाज में उसका इमेज है वो बनती है। Okay, so suppose you yourself can take a test about it. आपको किस तरह से आप विचार करते हो, किस तरह से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी है। अगर आप बहुत ज्यादा फिगर्स आपके दिमाग में रहते हैं, यू आर अ वेरी गुड एट मैथ्स, वेरी गुड एट नंबर्स। ओके, आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी इज वेरी गुड। ओके, आप बहुत रैशनल आदमी हो, प्रैक्टिकल हो, योर लेफ्ट ब्रेन इज स्ट्रॉन्ग। और अगर आप इमोशंस से जाते मतलब यू गो बाय इमोशंस, इंट्यूशन, जजमेंट, ओके, रैंडमली कुछ तो आप सोच रहे हो, तो आपका राइट ब्रेन स्ट्रांग है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। यू नीड टू बी अवेयर कि आप किस तरह के इंसान हो।
left brain dominated या right brain dominated. Okay, I am a right brain, I would say. Since childhood I am analyzing myself. I know that numbers I'm not that practically, but yes, I do the situation analysis, not rationally, not analytically many times, but mostly holistic. Okay, so that is my strength I have developed through years. Now what should be the further thing about it? ये ठीक है, हमको पता चला कि मैं right brain हूँ. I should be now knowing that I am having an awareness that मेरा right brain strong है, तो इसका मतलब है मुझे उसके ऊपर काम करना है. At the same time, I need to be alert. I need to be alert. मेरे antennas दिमाग के left brain का जो भी part है उसमें I need to be very cautious. Are you getting the thing? Yes, friends. Yes, ma'am. Yes, ma'am. At the same time, कोई और आदमी है, suppose अंकुर है. I'm just taking an example. Okay, and Ankur is very good at analytical abilities, logical sequencing, and rational. He's very practical. His इसका मतलब है उसका left brain strong है, उसकी strength है, वो उसके ऊपर उसको काम करना है. He will excel in life if he utilizes and encaches practical rational things in life. It is not only good in selecting your further career, but also in taking decisions. Not only in your life but in situations also. So अंकुर का अगर लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा है तो उसको क्या करना है? He should be first of all be aware कि मेरा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा है. That is my strength. That is my strength. So I need to build on it. I need to work on it and make it और बेहतर. So that is my that is the way of key to the success. But at the same time, Ankur should be aware also that right brain हमारा weak है. You need to be, आपके antennas आपके लिए alertness का काम करेंगे, जहाँ पे you need to take care that किसी situation में कहीं आप human touch तो नहीं गवा रहे. Suppose Ankur is a team leader और वो किसी project में काम कर रहा है and definitely that कोई leave मांग रहा है. A very simple example, और आपकी deadline आ चुकी है. In normal situation I would say yes, as an if I would have been Ankur I would say नहीं आज तो आप कल आपको छुट्टी नहीं मिल सकती. Okay, but then probably as a supportive team structure, as a supportive model of organizational behavior, I may take one step ahead and either myself or through my team I will get to know why that person requires a leave. Probably he has lost a person in his life. I cannot take a very rational decision over here and say ruthlessly no, you cannot. You will lose that, not that particular you win the case but you lose the person, or probably it will hamper the whole team spirit. As a leader how you behave also matters, and as a team member also. Suppose peer है, अंकुर के साथ कोई और काम कर रहा है, और that person is a very right brain kind of a person like me, and then suppose I and Ankur are working on a similar project at the same level, and he will try to dominate me based on his rational thinking, and then I would have different tantrums, or I would have probably I will get switch off. Probably I would get switch off because I know that Ankur is not going to pay heed on any emotions, whether I'm getting hurt, whether I'm getting bogged down by whatever he's saying, or whether what, there could be multiple things which come up. Okay, so emotional, because see, when you work in an environment, there you work in groups, teams, there are n number of people. You cannot say nahi, I'm this way. जिसको जैसे behave करना है करने दो. Who cares? Who cares is no more in picture now in today's world. Okay, you have to care. If you don't care, either you will get into a different style of leadership and lose your project. Probably that time you will win the situation, but nobody is going to respect you, or nobody is going to take you seriously. Okay, lekin you have to strike a balance. That is the crux of it. That is the secret of it. You need to balance. So that's what I talked about just now. That is left brain people and right brain people. Left brain people analyze a particular problem, wrong or right, and then come up with solutions.
Okay, and right brain people also actually work in the similar for the similar task, but they are more emotions are more dominated in these people, and we have to actually gel well with both these type of categories, left brain people as well as right brain people, because you don't have choices here. You don't have choices. Okay, do you have choices of selecting your own parents? Do you have choice over here? Sometimes in the team member also you cannot, because somebody has assigned, your higher authority has assigned that person, so you cannot, isn't it? So you have to actually deal with such situations properly. Here comes the organizational behavior ka crux. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay. Let's quickly go through Johari window now, as we have finished half of 50% of the session. So this window basically, I've got this slide directly from the net because I found it wonderful. Johari window basically can be taught in various way. I had taught earlier for the communication sessions in the earlier organization, but here I'm actually taking the same concept for organizational behavior as as I just mentioned, it can be a tool in conflict resolution. It can be a tool in self-awareness. It can be a tool in improving your personal, interpersonal relationships, group dynamics, and so on and so forth. Okay, so various environments and situations में जोहारी विंडो हम use कर सकते हैं, and it is actually a window wherein you are going to categorize these four quadrants. Quadrant 1 is open area, quadrant 2 is blind area, quadrant 3 is hidden area, quadrant 4 is unknown area. Okay, so these are the four quadrants, four हिस्से हैं, सेक्शन है ये विंडो के. ओके, ये विंडो पेन है और ये फोर सेक्शंस है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया एंड अननोन एरिया. और ये हमारे बारे में मैं बात कर रही हूँ, खुद के बारे में. So we are going to quickly pinpoint the history of Johari window because it has been developed by Joseph Luft and Harry Lingham. That is Joe and Ha. Joseph ka Joe and Harry ka Ha. Okay, so Johari. Okay, so describe the history of Johari window. Explain what is Johari window. Explain the quadrants. Identify individual types. Explain the ideal shape which should come up. And describe Johari window for a new team member, and describe Johari window for established team members and utility of it. Quickly we'll go through it with these points. So have you seen the line that leads to his pride? हम लोग देखते हैं ये होता है ट्रस्ट के बेसिस पे. Believe, loyal intuitions. Just a minute. So basically you can see a lion, a leader is moving ahead and trusting. The leader is strong and dependable. All the other lions in the pride feel protected by him and trust him. Basically यहाँ पे लीडर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, वो मुड़ के भी नहीं देखता, इतना उसके ऊपर ट्रस्ट होता है अपने टीम मेंबर्स का. ऐसे उसका थॉट प्रोसेस है, because he has confidence कि he will be followed by his team member. At the same time team members are blindly following him because they are feeling protected. They are feeling protected by the team leader, because they know that it is safe to follow this leader. Okay, so why is the quality of trust important in a leader? The leader is strong and dependable. All the other lions in the pride feel protected by him and trust him. Okay, it is very important that the member of the team or the subordinate trust their leader. So that trust factor is important. When a subordinate trusts his superior, he feels motivated to work under his leadership. He feels safe under his trusted leader's guidance and feels like following in the leader's footsteps. We are going to go at the higher level if we follow this person. Trusting the leader also helps the member to believe in the integrity of the leader.
He believes that his leader will lead with truth and righteousness. Okay, so ये सारी बातें important है. Trust, motivation, and righteousness. You need to have this concept imbibed in you. If even you are following a leader, you need to follow the right person. So how can you build trust among the members of our team? This is a model known as the Johari window, which stresses on the importance of feedback and disclosure to build a trust. This is one way of understanding this concept. कि ये trust अगर build करना है, if I want to be a leader, I want my followers, I want my team members to trust me. At the same time, if you are a peer among the team members, if I am given a task, and it is as you all know, when you work in team, okay, हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं. हमारी टास्क कभी ना कभी किसी से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ती है, कभी किसी को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ती है. समटाइम्स वी वर्क इन कोलैबोरेशन. तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है. आई नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड आई नीड टू टेक एफर्ट्स इन दिस. So Johari window is an effective technique which, when used appropriately, provides valuable information regarding one's own self and others, which is an important characteristic which every leader needs to possess to succeed. And I would say, okay, not only the leader, all of us should know, because initially we are team members, but आगे जाके हम लोग leaders बनते हैं, isn't it? So it's always better to know both the sides. It's always better to know both the sides. Okay, so let's learn Johari window in detail. Quick history. In 1955, Joseph Luft and Harry Lingham, two American psychologists, developed a model called as a Johari window. Johari window is a model for self-awareness, personal development, group development, and understanding relationships. They called the model Johari window after combining their first names Joe and Harry. Johari window is a simple and useful tool for understanding and training self-awareness, group dynamics, personal development, interpersonal relationship, improving our communication between two people or multiple teams, team development, and that is the interpersonal relationships or intergroup relationship. Okay, so it's a useful tool, especially so because it lays emphasis on and influences soft skills, behavior, cooperation, intergroup development, empathy, and interpersonal development. Anything which you have not followed here? Emphasis money, you need to stress on, you need to focus on. What? हमारे कम्युनिकेशन का किस तरह से इम्पैक्ट होता है हमारे काम पे, हमारे बिहेवियरल पैटर्न जो बाकी के लोग इंटरप्रेट करते हैं उस पे. सॉफ्ट स्किल्स, the way we behave, the way we use our body kinesics, the way we use our communication skills, verbal and non-verbal, हमारा behavior, हमारा एक दूसरे के साथ बर्ताव, सहकार्य, cooperation, intergroup development, team spirit, team bonding, because your give and take of data happens, give and take of knowledge happens, give and take of certain elements which are required to your system are happening there. Empathy, anybody? Empathy, what is empathy? Yes, friends, what is empathy? When I say that, when I'm talking to you, we can yeah. say, Yes, Deepali. empathy, we can say that an expression of emotions to a person who is sad or not well. Okay. Okay. An expression to the other person. There is a difference between listening and hearing. A typical example would be in your house. Okay, बचपन का एक सिनारियो या किसी के बारे में अभी भी हो रहा होगा. मम्मा कुछ बोलती है, ये करो वो करो, और आप okay, you are hearing it, but you are not listening it, isn't it? ये डिफरेंस होता है. Okay, आपके कान पे वो आवाज आ रही है कि बेटा ये काम कर लेना, आप सुनते हो और भूल जाते हो. You hear it, you have heard it, कि वो काम बता रही है, लेकिन आप you don't listen to her. समझ में आ रहा है?
This is one step. आगे जाके आप you listen, but you don't listen it empathetically. You don't understand the impact of what actually वो काम था. 1 + 1 2 करके आप छोड़ देते हो. लेकिन when you actually think and observe and try to interpret proper meaning of whatever she has told you all to do, you listen empathetically with full, you know, left and right brain use करके. Okay, that is empathy. Okay, when you actually have I think you should understand that this is different from sympathy. Probably few of y'all may confuse it with sympathy. Okay, what is sympathy? What is sympathy? यहाँ पे भी emotions आ जाते हैं. Sympathy. I have sympathy with you. I sympathize somebody. I console. I try to show sympathy. What is that? I'm understanding the Emotion support to someone. Sorry? Type of support or I mean, like I'm with you. Okay, I'm here. Yes, that is sympathy. I'm with you. Yes, a supportive emotion, right? Whereas empathy, what is empathy then? There is some deliberance of what? Of what? Listening quality or active listener. Activeness. Deliberation of activeness in understanding all the signals that that communication has given you. You empathetically listen. You should be empathetic listener because you should see what you can see. You can see also what you don't see. ये कैसे possible है? You observe the body language. You observe the words. You observe the tone of that word. You observe what that person is trying to show you all. Are you following this? That is empathy. The Johari window is based on 4 squares grid. The Johari window is made up of windows with 4 panes. Okay. The window is a square pane with a cross in the middle of it. This cross divides the window into 4 panes. 1, 2, 3, 4. You can see here. Each pane represents 2 things, stuff known to you and stuff known to other as well. Okay. Each contains and these windows are called regions or areas or quadrants. Each contains and represents the information, feelings, motivation, etc. in terms of whether the information is known or unknown by the person and whether the information is known or unknown by others in the team. अभी ये क्या है हम देखते हैं. Focus on over here on this window. You can take a snapshot of it. In front of you, you can see that. Okay, let's move here and make your understanding simple. First quadrant is over here, known. Second is unknown. Third is again unknown, and this fourth is again unknown. ये दो known है, ये दो unknown है. Known and unknown and unknown. Axis and y axis की तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे. Okay, I will put it in different word and tell now. Known and known. Okay, this is the self, about your own self, and over here is about others. Okay, so first quadrant over here talks about known by both. You know yourself and even others know you, how you are. This is the first quadrant. This is the open area, we call it as. This is a open area, we call it as. Okay, you know how you are and even others know well how you are. Typically when you are in a established relationship, जैसे माँ जानती है उसका बेटा कैसे है, and you know how your mother is. You, because since ages, since more than a decade you are together, you know each other very well. You have dwelled together. Suppose एक किसी organization में या फिर you know your school friends. School friends example would be best. They know you how you are and you know where they are. इसलिए ये I like that, हर एक friend जरूरी होता है, कितना भी कमी ना हो. हम बोलते हैं ये. This is very usual casual words we use very frankly. Only with those whom you know very nicely. And
other person also is knowing you very well. So words मायने नहीं रखते. अगर कमीना words यहाँ पे, sorry to say, but then अगर words मैंने यहाँ use भी किया तो वो बुरा नहीं मानने वाला, because he person also knows your how nasty you are, and you know that they are not going to misinterpret it in a different way, because both of you know each other, you are in a established relationship. Okay, so actually those are the motivating things in y'all, surprisingly. इतना अच्छा आप बात करते हो किसी भी तरीके से, मार के या चाहे शब्दों से या फिर झापड़ लगा के, you can afford to do this in an established relationship. This is the open area quadrant, the first quadrant. You know that person and that person knows you. This is the known kind of a quadrant. Okay, factual information and experiences you know about each other. Okay, coming to the next quadrant, that is second one. Okay, this is the blind area. This is the blind area. Means what? Means what? About you. Okay, known by others but not known by you. Difficult लग रहा है? I'll repeat. Others know you, लेकिन आपको खुद को पता नहीं है कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो. ये ब्लाइंड एरिया होता है हमारे कैरेक्टर में. सबको दिख रहा है लेकिन खुद को आपको नहीं दिख रहा है वो. ओके, क्या होता है? एनी आइडिया, एनी क्लू? Any clue? I think we have just 5 minutes left. Any clue? आपके हैबिट्स. ओके, आपके जो हैबिट्स होते हैं, एज एन एग्जाम्पल, दैट इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर यू. अरे मैं तो मतलब आपको पता भी नहीं चलता आपके हैबिट्स कभी कभी क्या होते हैं कि दूसरों को नोटिस होता है वो. ओके, यू आर ब्लाइंड, दैट यू आर ब्लाइंड स्पॉट होते हैं यहाँ पे. Your habits are known to others but unknown to self. Okay, आपको समझ में आ रहा है ये? Hello? Yes, ma'am. Yeah. So that is unknown. This is the blind area. Known to others, noticed by others, but you are unaware about your habits. Okay, this is the second quadrant. Third quadrant is that known by yourself. आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन it is hidden from others. It is others are unaware about it. जैसे हमारे खुद के likes and dislikes होते हैं, जो हमको ही मालूम होते हैं, दूसरों को मालूम होना जरूरी नहीं है. They are hidden. Maybe after established relationship आप ये quadrant increase करते हो और ऊपर वाले quadrant में जाते हो, known area में, कि बाकी लोगों को एस्टैब्लिश रिलेशनशिप होने के बाद पता चलता है, वो इंक्रीज होती है विंडो सेक्शन. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से दैट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अदर पीपल मे नॉट बी अवेयर. हमको खुद को मालूम है. सेकेंडली, हमारे फेलियर्स लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को रिजेक्शंस आए हैं लाइफ में. Sometimes even your close family member also is not aware about the rejections. वो अपने दबे पड़े हैं आपके दिमाग में या आपके दिल में. Okay, there are some hidden rejections जो आपको ही पता है, दूसरों को किसी को भी मालूम नहीं है. This is the hidden quadrant. Okay, some things may not be purposely hidden obviously, लेकिन वो कभी रिफ्लेक्ट होने की चांस ही नहीं मिला या कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. क्यों मैं दिखाऊं? ओके, क्योंकि वैसे कोई सिचुएशन ही नहीं आई. पॉजिटिवली अगर हम ले तो प्रोबेबली आपके अंदर वो एक हुनर है जो कभी यूज करने का मौका ही नहीं मिला लाइफ में. लेकिन प्रोजेक्ट में कभी कभी ये अचानक से लीडर आइडेंटिफाई करता है एंड देन यू कम टू नो अबाउट इट. दैट इज द hidden quadrant. And the last quadrant, and then we'll take a break. Probably will not be able to finish it today. I'll finish it on Monday, first half of the session. The last quadrant, let me complete. The last quadrant, now you will tell. Anybody would like to try? I will help. Anybody would like to try the last quadrant? It is the unknown area. Unknown area. You are unaware about it.
and so are others. ना आप जानते हो ना वो जानते हो, पूरा साइलो है. साइलो मतलब hidden, nobody is aware. We may be unaware that we have a lack of self-esteem in which others do not realize this as well. Okay. पहले वाले थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? मेरे अंदर जो हुनर है मुझे मालूम है, लेकिन यूज करने का मौका नहीं मिला, इसलिए किसी को मालूम ही नहीं है मेरे अंदर वो स्किल है, वो हुनर है. ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट जब मैं बोल रही हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना आपको मालूम है ना किसी और को मालूम है, वो इवॉल्व होता है किसी सिचुएशन में, देन यू कम टू नो अबाउट इट. Okay, so that is the fourth quadrant. Okay, so these are the 4 quadrants which I would like to mention here as the Johari window quadrant. Okay, so to expand, we may talk about it in the next session. Probably a little part is remaining, and then you will understand how it is utilized basically. Any question up till now before we end the session? Please remember one clue and write it down. Quadrants are expanded. How? In life, when you are going to utilize this quadrant 1, 2, 3, 4, that is open area, the second blind area, the third hidden area, and the fourth unknown area. You can expand by asking and telling. Asking from known to unknown, asking and making them aware, and by telling to others from known to unknown. Okay, are you following this, friends? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maybe I can take any questions and then we can break. I'll stop here. Was it interesting, friends? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Any inferences, any quick learnings, 1 or 2 learnings, we can then stop. Quickly. It's time up. Learning from today's session was our perception of looking at the people, or from we have to think from all the sides, not only one side. Yes. Okay. Perceptions. What else? More important, the point for the session. Should not judge people. Okay. Why? It is very important. Not to track the pattern. Just focus on other things also, by not to judge. There are few hidden things. That is the most important, point. Because some things are there in front of you, but still you cannot see. The optical illusion diagrams you should never forget. Okay. जैसे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, इस तरह से. So in life, when you take decisions and interpret, okay, you need to make use of your left brain and right brain. दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए. किस तरह से? जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, सपोज मेरा राइट ब्रेन बहुत अच्छा है, आई कैन एनकैश इट. एट द सेम टाइम आई नीड टू बी अवेयर कि रैशनल भी कोई चीज है. नंबर्स ऑल्सो आर देयर. यू नीड टू थिंक पॉजिटिवली एंड नॉट मेक मिस्टेक देयर. या फिर मैंने अंकुर का एग्जांपल बताया कि प्रोबेबली अगर अंकुर इज लेफ्ट ब्रेन पर्सन, ही इज वेरी रैशनल. एट द सेम टाइम ही शुड टेक केयर दैट देयर आर सम इमोशनल थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ. ही शुडंट इग्नोर देम. Okay, consider them. Don't put more energy on that, but then at least consider them while taking decisions, because we may ignore unknowingly. Are you understanding this? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, then we'll finish this chapter of Johari window in the session on Monday. Okay, thank you so much. Good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.